Well, so we are starting off with graphs of motion. Graphs of motion. Okay, so by the term graph, you know the concepts that we are going to learn over here is not necessarily applicable only for motion, but also for other chapters. Only chapter graph এর উপরে এই গ্রাফের কনসেপ্টগুলো applicable হবে. But obviously motion এর গ্রাফ থাকবে না, অন্য টপিকের গ্রাফ থাকবে, but whatever concepts we learn সেগুলো কিন্তু সব জায়গায় applicable হবে. Alright? Now the first question that appears is, what are the basic relations that we develop? Whenever we are analyzing any graph, this is a general situations for graph. So if we plot along y-axis and along x-axis some quantity along x-axis, some quantity along y-axis. There are two very important things that are used in graph. One is slope, another is area under the curve. Okay? Slope. What is slope? How do you find out slope? Right. Slope is the slope of a straight line. Okay. So the graph not necessarily will be a straight line. So if you are trying to find out the slope for a graph which is not a straight line, that means it will have a tangent to the given curve. So slope also represents the slope of the tangent, not necessarily slope of the graph. In general, for straight lines, if you have two different points, you can find out the slope as y2 minus y1 by x2 minus x1. But in calculus method, the slope is also given by dy dx. Okay? So, if you have a variable on y, another variable on x, slope will always give you dy dx, that is differentiation of y with respect to x, and that represents physical significance of differentiation is what? Rate of change. So in any situation from a graph, if you wish to find out the rate of change of y with respect to x, you have to find out what? Slope. Okay, so slope gives rate of change of variable on y with respect to variable on x. Fine? If I give you displacement versus time graph and you find out the slope of the displacement versus time graph, so what do you get? You get rate of change of displacement with respect to time. So displacement with respect to time, rate of change is velocity. Similarly, instead of displacement versus time graph, if I give you a velocity versus time graph, the slope will give you rate of change of velocity with respect to time. So rate of change of velocity with respect to time is acceleration, right? So this is the general method of finding out the slope. Slope gives you the rate of change of y with respect to x. Now, in any particular graph, if we know the graph and they have asked you to find out a quantity which is the product of x-axis quantity and y-axis quantity. Mane x-axis quantity or y-axis quantity ke product korle you get that quantity. Then you can always find out the value of that quantity by area under the curve. Area under the curve. Area under the curve gives a quantity which is product of x-axis quantity and y-axis quantity. Means if I give you a velocity versus time graph,
That means velocity on y-axis and time on x-axis. What does velocity into time give you? Atupun pause. Velocity into time gives you what? Displacement. Displacement. So from a velocity time graph, if you want to find out displacement, go for area. Is that clear? Similarly, we don't have a velocity time graph. Instead, we have an acceleration time graph. Then acceleration into time gives you what? Velocity. So from an acceleration time graph, if you wish to find out velocity, you have to go for area. Is that clear? The general conception बोले ऐसे. So from our graph, exactly integration ने हमरा area का बात करें. Integration दिए we you find out the area. যেরকম differentiation দিয়ে আমরা slope টা বার করি, সেরকম area টা বার করার জন্য we use integration. Yes. To find out the area, we use integration. Integration টা বার করে দিয়ে আমরা area টা find out. So you just need to understand the significance of slope and significance of area for any graph. যে কোনো গ্রাফের জন্য, ঠিক আছে? Significance টা কি? Significance is slope का significance है. It will give you a quantity which is the ratio of y-axis quantity to x-axis quantity, and area will give you a quantity which is the product of x-axis quantity and y-axis. এটা মাথায় থাকলে you'll be able to solve it. হ্যাঁ বলুন. Straight line or parallel बाकी ज़्यादा पता करने का जरूरत नहीं है. You either given in the situation or you'll be you cannot just remember the graphs of all the different functions. ये physically possible नहीं है. कुछ basic function जैसे trigonometric function, sine function, cos function, tan function, trigonometric जितना function है उसका graph याद रखना, या inverse trigonometric function जो है याद रखना. Square is obviously parabolic. तो parabola का graph लोगों को मालूम है कैसा shape होता है. So हाँ, और straight line का graph. So these are few graphs you need to remember. बाकी you cannot remember all possible situations, right? Now the basic motion graph we start. First is uniform motion. Uniform motion is की graph. If I ask you to plot the displacement versus time graph, S theta, uniform motion, we draw for it. It will be a displacement versus time graph for a uniform motion has to be a straight line and a straight line. It has to be a straight line. Yes. Our velocity versus time graph. VT graph क्या होगा? Uniform motion है VT graph. Velocity versus time graph. Time axis. Straight line parallel to y, because the time is changing, but for uniform motion velocity does not change. So you take time 1 second, velocity is 2 meters per second. You take time 2 seconds, velocity is 2 meters per second. Time 3 seconds, velocity is 2 meters per second. You time change करते रहो, लेकिन velocity change. So that means it will be a line parallel to time. Okay. Next, acceleration versus time graph. AT graph कैसा होगा? एक सुनिए आप बात नहीं सॉरी आंसर देखिए आप मॉडल हवे स्ट्रेट लाइन कैसा है? डाउन अच्छा डाउन ऐसा हो जाए. कितना मोशन पड़ा आप लोग, कितना कैसा कैसा ग्राफ समझ में आया. क्या मोशन है उसमें? एक्सीलरेशन कितना होता है? 0. तो 0 ग्राफ पे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा. It will be a line on the time axis. 0 है ना वैल्यू, तो 0 मतलब क्या? टाइम एक्सिस के ऊपर ही लाइन बनेगा. मतलब even if you don't draw anything that will do. Even if you don't draw anything that will do. बोला मुझे ऐसे वैल्यू टा तो 0 एक्सीलरेशन. अच्छा यूनिफॉर्म मोशन বোঝা আছে. এবারে আসছি আমি
uniformly accelerated motion. बोलो क्या ग्राफ बनेगा? First displacement versus time का कैसा बनेगा? Uniformly accelerated motion. Displacement versus time का it will be a straight line. बराबर. Uniform motion जो straight lines लो. তাহলে এর জন্য equal intervals এ equal value change বেশি হবে মানে if you take একটু আগে আমরা পড়েছিলাম what is the displacement in equal interval of time 1:3:5:7 मतलब बढ़ता जाए so you will have a curve upwards and obviously it will be a parabolic curve समझा it will go on exponential increase then next BT graph let's see BT graph क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा लेकिन उसका चेंज विल बी इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम सो इट विल बी अ स्ट्रेट ठीक है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा acceleration is constant means with the, even if the time changes value of acceleration will not change so it will be a time line straight line parallel to time axis all right uniformly retarded motion uniformly retarded motion फिर हम ग्राफ पर displacement time graph uniformly retarded motion I have two options one is like this another is like this konta So the car was moving. You started applying the brake. So as soon as you start applying the brake, does the car start moving in the backward direction? क्या होता है? एक स्पीड कम होता रहता है, लेकिन जाता तो सामने ही है ना. So that means वो सामने ही जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा. लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा उससे कम बढ़ेगा सो समझना यूनिफॉर्म retarded motion what will be the BT graph ये ST ग्राफ था ये ST ग्राफ था BT ग्राफ क्या बनेगा इसका जल्दी से फास्ट it will be a straight line coming down वेलोसिटी ज्यादा था ब्रेक लगाया वेलोसिटी बढ़ेगा थैंक्स ऑलराइट तो दैट्स और व्हाट इज द 80 ग्राफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिटार्डेशन कांस्टेंट तार माने रिटार्डेशन माने वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग बट value of acceleration is same but its direction is changing opposite to the motion of the body motion का यदि है acceleration is in the opposite direction so you take the acceleration what positive or negative so you have a straight line parallel to time axis but below the origin यहाँ पर above the origin था लेकिन यहाँ पर below the origin why simply the acceleration is negative acceleration है डालकर और कुछ नहीं हो जाएगा fair enough increasing acceleration BT graph उतना रहेगा increasing acceleration BT graph what you can increasing acceleration BT graph
what happens? Constant acceleration was straight line like this. अगर acceleration बढ़ता जाएगा तो उसका velocity ऐसे कर्व नहीं बनता, ऐसे बढ़ेगा. Acceleration बढ़ रहा है मतलब velocity जितना बढ़ना चाहिए था उससे ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए वो straight line ना होके कर्व. Is that clear? And what will be its AT graph? Now, nothing is been mentioned about how the acceleration increases, right? So, if it is mentioned that the acceleration is increasing uniformly, then you will have a AT graph straight line. Otherwise, according to the given condition जैसे दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से ग्राफ होगा, ठीक है? This is the VT graph for increasing acceleration, and this is the AT graph for increasing acceleration. Similarly, you can go for decreasing acceleration. The VT graph will be just like the ST graph, uniformly retarded motion will be like this, and acceleration will be like this, like the VT graph. AT graph will be like the VT graph. ना हम जानी ना non-uniform acceleration जो दिखा है, हाँ মানে VT graph টা obviously ওপর দিকে bend করবে, যদি increasing ব্যাপারটা আমার জানা থাকে, এবারে non-uniform acceleration এ decreasing ও হতে পারে, হ্যাঁ non-uniform decreasing acceleration হ্যাঁ আমি জানি না ওখানে শেপ একটু আলাদা হতে পারে, মানে ডিফারেন্ট পাওয়ারের জন্য 2 স্কয়ার হলো, কিউব হলো, টু দি পাওয়ার 4 হলো, তাহলে কার্ভগুলো একটু উপরে স্লোপ চেঞ্জ করবে, বাট অল অফ देम উইল বি কার্ভ, ঠিক আছে? সেটা প্রিসাইসলি ড্র করা যাবে না, ড্র করতে হবে, কম্পিউটার বা ইয়েতে গ্রাফ সে ফেললে তখন হয়তো ওই ভ্যালুটা দিয়ে দিলে প্রিসাইসলি ড্র করবে. Anyhow, this is the basic discussion. Now, one question. Question is, they might give you different situation and they might ask you what type of graph should I have. But before we do the situations, I have one question. I want to plot acceleration versus velocity graph. Okay, let's stick to our little basic first. Velocity versus displacement. अच्छा, एक क्वेश्चन पे আমি वेट করছিলাম. velocity versus displacement graph আমি বলে দিলাম কি হবে. তোমরা বলবে কি ইকুয়াল কিছু নেই, কোনো অপশন নেই, কিছু নেই. what are velocity versus displacement graph? কার for a body moving with uniform motion. কি হবে তাহলে গ্রাফটা? ইউনিফর্ম মোশনের জন্য vx গ্রাফ কি হবে? v तो कांस्टेंट होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लेकिन velocity constant. So it will be a graph parallel to x-axis. और uniformly accelerated होले uniformly accelerated motion होले vx graph के मॉडल देखते हैं. क्यों पैराबोलिक क्यों होगा? एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन तो चेंज है, मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, इक्वल चेंज. अब कैसे पता है इक्वल चेंजेस हो रहे हैं? See, so when you feel a little confused about how v is related to x, उसका एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं पहले. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है? v square equal to u square plus y square, right? So देखो v क्या रिलेशन में है? स्क्वायर रिलेशन, और डिस्प्लेसमेंट लीनियर. तो जब भी एक स्क्वायर है दूसरा लीनियर है मतलब ये पैराबोला, ठीक है? सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. हो जाएगा सर? द ग्राफ विल बी लाइक दिस, पैराबोलिकली इंक्रीज होगा. अच्छा একটা ছোট ঝামেলা হবে, একটা ছোট প্রবলেম আছে, একটা ছোট প্রবলেম কি বলছি আমি? v square equal to u square plus y square. You know u square is a constant. Okay, don't ignore this. Ignore v square equal to twice as. So v is plotted along which axis? Y axis. And s is plotted along x axis. So isn't this y square equal to 4ax type graph?
y square equal to 4ax टाइप ग्राफ. So y square equal to 4ax टाइप ग्राफ ऐसा होता है, राइट? पैराबोला तो ऐसा होता है ना. So we are not drawing the negative part, we are drawing only the positive part. वो मैंने कहा ऐसा नहीं था. बोला ऐसे. और যদি এটা y square equal to minus 4ax ফর্মে থাকতো তাহলে এই দিকে হতো. তখন এরকম ডিক্রিজিং টাইপ. বুঝছেন? এবারে ইউনিফর্মলি অ্যাক্সিলারেটেড মোশনের জন্য how will you relate acceleration and velocity? Want to relate acceleration and velocity? Uniformly accelerated motion. Straight line parallel to x-axis. Has to be. You understand why? Because you need this uniformly accelerated motion. The velocity may change, but acceleration will not change. Acceleration will remain constant. Okay? So ask you the basic questions. Ask yourself the basic questions कि हम कर क्या रहे हैं और situation क्या है. You'll get the answers. What is it? Is this clear? So we have discussed about the graphs. Now let's apply. Here to apply to us. Chapter. Graphs of motion asymptotic chapter का करो. First question. The answer. The body starting from rest moves along a straight line with constant acceleration. The variation of v with s is equal. C. Option C. Type of number. Variation of velocity with respect to displacement. Option C. ना बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है. तो हाँ, तो यहाँ पर तो कुछ मतलब थ्योरी बेस्ड है ना. तो जो सम हम लोग वो जो पहले वाला असाइनमेंट में किए, इतना बड़ा कैलकुलेशन करके पूरा बोर्ड भर गया और हम लोग को एक बेसिक थ्योरी बता था वो लगा देते तो 2 सेकंड में आता, राइट? सो यू हैव टू अप्लाई द थियरीज यू आर लर्निंग फ्रॉम द सम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A ball is thrown vertically upwards. Which of the following plots represent the speed time graph? Remember, they didn't mention velocity time graph. Speed time graph. Which of the following represent the speed time graph during its flight if the air resistance is ignored? Not ignored. Huh? Not ignored. Oh, acha. Not ignored. Actually, air resistance is not ignored. Dale kya hobe? Dale kon graph hobe? Huh? B for Bombay. D for Delhi. कोटा वाला. Air resistance आ गया. ऊपर एक का समान air resistance की करवे. तो नीचे की ना. हाँ, तब air resistance का और ये का वाले. अच्छा, you need to know a basic relation for air resistance. এটা আমরা কোথায় পড়েছিলাম? আমরা না fluids in motion এ পড়েছিলাম. air resistance আমরা 2D তে পড়েছি. air resistance না নিয়ে আমরা 2D পড়েছিলাম, ঠিক আছে? সো fluids in motion এ যখন আমরা টার্মিনাল ভেলোসিটি পড়েছিলাম, টার্মিনাল ভেলোসিটি করার আগে আমরা একটা ফর্মুলা পড়েছিলাম. the force acting on any object moving through a viscous medium is given by F equal to 6 by eta RV. Stokes law. Stokes law. So this deals with the viscosity of fluids. So it says that the force or the acceleration is directly proportional to velocity. Means this resistive acceleration is directly dependent on velocity. If the velocity increases, the acceleration increases. If the velocity decreases, acceleration decreases, right? So when you throw a body up, what happens to its velocity? Increases or decreases?
স্পিডটা ডিক্রিজ করে, তার স্পিড যদি ডিক্রিজ করে তাহলে দিস রিটার্ডিং অ্যাক্সিলারেশন উইল ডিক্রিজ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, सो एक्सीलरेशन का वैल्यू डिक्रीज करेगा, लेकिन ये एक्चुअली रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस द रिटार्डेशन। सो द ग्राफ विल गो फॉर अ decreasing retardation phenomenon. So what is a decreasing retardation phenomena? Like this. VT graph for decreasing acceleration. VT graph for decreasing acceleration is like this. Means ये straight line होना चाहिए था retardation के लिए. Decreasing minus decreasing retardation. Why? When a body is thrown in the vertically upward direction, acceleration due to gravity acts on this direction. मतलब ये retardation retard करेगा या accelerate करेगा? retard करेगा, उसका velocity हमें घटेगा, तो उसमें जो resistive force act कर रहा है वो भी घटेगा, मतलब उसका initial retardation ज़्यादा रहेगा, gradually retardation घटता जाएगा. That is why the graph goes like this, right? Then when it starts falling down, down क्या होगा? जब it starts falling down, तब velocity नीचे दिखे और acceleration of नीचे दिखे तो नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनो, velocity नीचे का डायरेक्शन में, acceleration भी नीचे का डायरेक्शन में। अब जैसे जैसे velocity बढ़ते जाएगा, इसके ऊपर resistive force कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? resistive मतलब opposite direction। resistive force ऊपर काम करेगा, तो अगर रेजिस्टिव फोर्स ऊपर काम करेगा जिसका वैल्यू वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ने से रेजिस्टिव फोर्स का वैल्यू मतलब जितना वो नीचे गिरते जाएगा उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता जाएगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा और रेजिस्टिव फोर्स कौन सा डायरेक्शन में काम करेगा? तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, g का वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन विल डिक्रीज, है ना? क्यों उस तरह से इफेक्टिव एक्सीलरेशन इज g माइनस a, तो ये a का वैल्यू बढ़ रहा है, तो g माइनस a का वैल्यू क्या होगा? घटेगा ना, so that means the motion will be a decreasing acceleration type motion। माने decreasing acceleration माने acceleration मतलब स्ट्रेट होना चाहिए था मूवी ग्राफ, और एक्सीलरेशन अगर डिक्रीज करेगा तो ग्राफ क्या होगा? मींस इट विल बिकम लाइक दिस। बोलो मुझे it should increase ना करेगा, effectively এটা b হওয়া উচিত, প্রথম পার্টের গ্রাফটা নিচে নেমেছে আর পরের পার্টটা স্ট্রেট লাইন না হয়, it will be a little bend, সেই বেন্ডটা দেওয়া নেই। vt গ্রাফ ওকে, it is a speed time graph না, velocity time graph না দিয়ে ওরা speed time graph দিয়েছে, তাহলে speed will go on increasing but the rate of increase of speed will decrease, माने acceleration का decrease होता है। ग्राफ has to be like this। যাই হোক এখানে b আর d এর মধ্যে একটা কনফিউশন থাকছে, সো we don't have an option, d b টাকে নিতে হবে, ঠিক আছে? কারণ d টা represents that with time the acceleration is increasing, acceleration is not increasing when it is falling down, it is decreasing, ঠিক আছে? So একটুখানি গ্রাফটা ড্র করে নেবে খাতায়, it will the graph actual shape should be like this। actual shape টা এরকম হবে, প্রথমটা হচ্ছে টপ ডাউন, তারপরটা হচ্ছে এটা actual shape। Alright, next question number 3।
এখানে এখানে তো কোনোটাই ম্যাচ করছে না ঠিকঠাক, বিটা সেকেন্ড পার্টটা স্ট্রেট আছে, ওটাকে একটুখানি যদি ডাউনওয়ার্ড টার্ন হতো তাহলে নেওয়া যেতে পারে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 3, 3টা কি হবে? मतलब जो पॉसिबल है, which of the following velocity time graphs shows a realistic situation for a body in motion? টাইমটা নেগেটিভে যেতে পারে, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে বাদ বাকি সবকটাতে টাইম নেগেটিভে যেতে হবে কোনো না কোনো সময়, বাট বিটা একমাত্র টাইম ক্যান গো অন ইনক্রিজিং কন্টিনিউয়াসলি, ঠিক আছে? সো অপশন বি উইল বি কারেক্ট। আচ্ছা, তাহলে আজকে এতটাই থাক, আমি বাকি যে কোশ্চেনস গুলো আছে সেগুলো নেক্সট ক্লাস ডিসকাস করব আফটার ইউ হ্যাভ মেড আ ট্রাই, ঠিক আছে? সবকটা অ্যাটেন্ড একটু করে নেবে, আর নেক্সট ক্লাস উইল স্টার্ট অফ উইথ ভেক্টরস।